कंस्ट्रक्शन वर्क काम चले। तो इसलिए मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इस पायदार नेट की तरह जो सड़कें बना रहा है इसको और आगे बनाएंगे और गति शक्ति के साथ देश आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर राज्य भी आगे बढ़ेंगे, हिमालय भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Hasnain Masoodi. I would like to, 1 second, I request honorable members to abide by Rule 349. It is very clear. A member shall not leave the seat immediately after his speech. And so many directions, rules are there. Please observe it. And honorable members, please do not have any conversation with the official box. It's only the prerogative of the ministers. Please. Yes, Hasnain Masoodi ji. So this. जनाब मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में बोलने का मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अच्छा होता अगर मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते तो और वो तो यहाँ तारीफ ही बटोरते, हर एक उनकी तारीफ ही करता, लेकिन किसी वजह से वो नहीं है। लेकिन हमारे लिए वीके सिंह साहब भी काफ़ी हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि उनका जितना अनुभव है जम्मू कश्मीर के बारे में किसी और का नहीं होगा। तो जनाब इस साल जो प्रोविजन रखा गया है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि 5% जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका क्लेम कर रहे हैं ये जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, और ये तीसरे नंबर पर है। मुझे लगता है कि डिफेंस और जो कंज्यूमर अफेयर्स के बाद ये तीसरे नंबर पर है जिस पर इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए भी बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम्स हैं, बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं। भारतमाला का प्रोग्राम है और बाकी 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का भी प्रोग्राम है जो कैपेक्स के तहत जो और एडिशनल ग्रांट्स दिए गए हैं स्टेट्स को भी, और उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। तो जनाब कुछ विषय हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो चिंता का सबब है। एक तो ये कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जैसे पहले भी जिक्र किया गया, रोड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी ये बाकी में, और कहा गया कि 44वें नंबर पर रोड क्वालिटी में है जबकि जर्मनी पहले नंबर पर है। तो उस तरफ ध्यान देने की तवज्जो है कि क्यों ये जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात जनाब है जो जस्टेशन पीरियड है। आमतौर पर जहां भी रोड बनाने का काम शुरू किया जाता है तो जो उसके टारगेट्स होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, उनको एडर नहीं किया जा सकता है क्योंकि पहले देरी होती है वो साइट क्लियरेंस में। वो भी एक बड़ा विषय है, वो भी बड़ा एक प्रॉब्लम है। मुझे मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि कहीं पर रोड अगर सैंक्शन भी हो तो लोग नहीं आते हैं कि वो रोड बनाने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंटली कुछ परेशानियां हैं जिनमें ठेकेदार वगैरह वो आगे आते नहीं है रोड बनाने के। अभी हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अनंतनाग से छत्ताबल का रोड हुआ तो हमें तकरीबन 1 साल इंतजार करना पड़ा कि कोई आए और वो रोड इस रोड का वो कंस्ट्रक्शन करे। तो वो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो जस्टेशन जो बनाने का जो पीरियड है जो पीरियड जनाब। उस तीसरी बात यह है कि स्टेट का जहां तक है, क्योंकि इसमें स्टेट का भी रखा गया है कि स्टेट सेक्टर में कितना और सेंट्रल सेक्टर में कितना होगा। स्टेट रोड्स के लिए भी प्रोविजन रखा गया है और सेंट्रल में भी, लेकिन सीआरएफ जो है वो रिलीज नहीं होता है, उसमें बड़ी देरी लगती है, जिस वजह से वो वहीं का वहीं रहता है जो भी प्लान होता है, जो भी वहां का रोड बनाने का प्रोग्राम होता है। तो जनाब ये मोटे मोटे पर है जो चुनौतियां हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो डैश है, डायरेक्शन है एंड द काइंड ऑफ कमिटमेंट द मिनिस्टर हैज, तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। अभी श्रीनगर तशरीफ लाए थे, वहां पर अभी उन्होंने इफ्ताह किया 2 रोड्स का, तो हम भी शामिल थे उसमें। तो वहां भी उनके नोटिस में लाए गए थे कि कुछ चैलेंज जो हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर को है रोड के हवाले से। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा NH44 का। यह 3 महीनों में कोई 1.5 महीना NH44 जो कि एक शाहराग है, जो कि एक लाइफ लाइन है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, वो बंद रही। और सारा अगर आप जनाब देखेंगे रोड्स पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कैजुअलिटीज जो होती हैं, जो फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें आपको यही रोड या तो डोडा वाला रोड या ये NH44 वाला रोड, ये सबसे आगे है सारे मुल्क में। कितने फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। अब कैसे काम चलेगा जब आप एक जो मेन लाइन है, लाइफ लाइन जो है वो रहेगी कोई मिल मिला के 3 महीने में 1.5 महीने बंद रहेगी। तो मैंने ये तजवीज़ दी मिनिस्टर साहब को ये की थी कि आप ये एलिवेटेड रोड बनाइए बिटवीन रामबन एंड बानियाल,
जनरल साहब जानते हैं, तो वही सबसे बड़ा सेक्टर है जिस सेक्टर में ये नहीं कि हुआ नहीं कुछ, 2 चनानी की टनल बन गई, चाहे काजीकुंड की टनल बन गई, बहुत कुछ हुआ आगे, लेकिन इस सेक्टर को आप एलिवेटेड बनाइए। एक तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हिल्स को, हर आए दिन वो हिल्स सॉइल इरोजन हो रहा है, हिल की जा रही है। तो दूसरी बात यह कि उस तरफ सर 5 टनल्स की, क्योंकि आप जानते हैं, टोपोग्राफी जानते हैं आप, 5 टनल्स की जनाब जरूरत है इमीडिएटली, जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे। एक जनाब है देसा कापरन, इससे क्या होगा, डोडा का जो आप जानते हैं कास्तीगढ़ का इलाका वो सारा जुड़ जाएगा कश्मीर के साथ, वैली के साथ, और देसा कापरन उस पर पहले ही शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है कि उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो जनाब एक लहंद और एक ऐसा ही एक है जाजरन का टनल। देखिए अभी आप डिलिमिटेशन का ये बना रहे हैं प्रोग्राम के, नहीं हम किसी और कारण से राजौरी पुंछ को मिलाएंगे अनंतनाग के साथ, साउथ के साथ, जबकि 6 महीने रोड ही बंद रहता है। आप खुद जानते हैं 11,000 फुट के करीब, 11,000 फुट ऊंचाई वाले वहां पर जो हिमालयी सिलसिला है पीर पंचाल का, तो वहां पर जरूरत है कि ये जो जाजरन वाला टनल है, फिर ये पहले उसमें मुझे लगता है टेंडर शुरू हुआ है, उसमें इनिशियल वर्क हुआ है और डीपीआर वगैरह बना हुआ है, लेकिन सुस्त से काम चल रहा है। तो जनाब राजधानी, आज जानते हैं गुरेज कितनी कठिनाई है, आप खुद रहे हैं वहाँ, खुद देखा आपने कि कितनी कठिनाई है बांडीपुरा से गुरेज, और गुरेज तो एक पेशेंट के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ता है। अभी वहां पर जनाब रिक्रूटमेंट थी क्लर्क्स की, उस रिक्रूटमेंट के लिए वहां से बच्चों को उठाना पड़ा हेलीकॉप्टर के जरिए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। सो इतनी मुश्किल है। और अगर आप जब ये बनाएंगे आप ये जाजरन वाला, ये राजधानी वाला, तो उसके बाद साधना पास, यू नो अगेन बिटवीन टीटवाल एंड कपवारा, हाउ मेनी एक्सीडेंट्स हुई, रोड एक्सीडेंट हुई कम अक्रॉस, कितनी जाने जाती हैं साधना पास पर। तो जनाब इस टनल पर तवज्जो देने की जरूरत है। और ये देसा का आपने तो वो बड़ा ही महत्व है, तो और टनल्स पर तो काम हो रहा है। तो इन एरियाज में जनाब, इन एरियाज में ताकि रोड कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में और ज्यादा हो, सारा हिली है, सब जो लोअर हिमालयाज हैं, पीर पंचाल का सिलसिला है, ताकि और ज्यादा यातायात हो, ट्रांसपोर्ट बन जाए और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अभी एक बड़ी समस्या है कि रेल नहीं जाती है। तो जनाब आप जब NH-44 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए बंद रहा, तो सारा फ्रूट जो है 6 करोड़ के करीब बॉक्सेस है, वही पड़ते हैं, माल वही सड़ता है, और फिर टैरिफ जो उसका लेने का है फेयर जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। yes. और मैंने 2-4 रोड्स के लिए बारे में बोलता हूँ, तो मिनिस्टर साहब यहाँ पर, तो उससे मुझे और ज्यादा मदद मिलेगी, ये समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक है जनाब ये देसा कापरन वाली रोड, जिसका मैंने जिक्र किया, पहले टनल और उसके बाद और फिर लहमदजन से बटनूर, ये जनाब पहलगाम से जाएगा त्राल इलाके में, इससे जो अमरनाथ यात्रा है और यातायात है वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल कोलर के साथ शुरू हो जाएगी, त्राल वैली में जाएगी, और फिर वहां से पश्तून ख्रीव वाला रोड, तो इससे ये सारा इलाका 25 किलोमीटर नजदीक आ जाएगा। तो जनाब लतपोरा से पांथाचौक तक बाईपास NH-44 का, क्योंकि इसी पर आर्मी का आपका है, जो भी आर्मी इंस्टॉलेशन वही है, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वहीं पर है, जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, माइनिंग हो रही है, वो इसी रोड पर हो रही है। तो इस जरूरत है कि इसको हम कन्वर्ट करें एक बाईपास, NH-44 बाईपास। थैंक यू सर। और संगम लासीपुरा, तो मिनिस्टर साहब मुझसे एग्री कर रहे हैं, वो तो दिलचस्पी से सुन रहे। संगम लासीपुरा, जनाब संगम से जो ट्रॉलर्स, बड़े बड़े ट्रॉलर्स जाते हैं, लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके लिए जरूरत है कि वो रोड उसका स्टेटस बढ़ाया जाए। और मुझे वादा किया मिनिस्टर साहब ने कि ये भारत माला के तहत इसके लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि निर्भर न हो स्टेट। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मसूदी जी प्लीज, बस जनाब बहुत शुक्रिया जनाब। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये सारा जो मेरी जो मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन इसी तरह जनाब 7,270 करोड़ रुपए आपने रोड सेफ्टी पर, मेरे ख्याल में बहुत कम है। ओके, सुशील कुमार सिंह जी, और किसी तरह से कनेक्ट कीजिए इसको, क्या नाम है, जो कैजुअलिटीज होती हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, उनका कोई प्रोविजन रख लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। सुशील कुमार सिंह जी। सभापति जी, आपको धन्यवाद करते हुए मैं सड़क मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय,
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस मंत्रालय के काम की जितनी चर्चा की जाए, इस मंत्रालय की जितनी प्रशंसा की जाए, वो कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री गडकरी जी और साथ साथ राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, इनके नेतृत्व में इस मंत्रालय के माध्यम से देश के अंदर सड़क निर्माण के क्षेत्र में देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक, यानी हर क्षेत्र में जिस तरह से तेज गति से काम हुआ है, उसकी प्रशंसा पूरा देश करता है, सारे लोग करते हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के भी मेरे साथी इसकी आलोचना नहीं करते, इसकी शिकायत नहीं करते, लेकिन चूंकि काम हो रहा है इसलिए हमारे विपक्ष के भाई भी कोई नई मांग रखते हैं, कोई नया सुझाव देते हैं, ताकि जब देश में इतना काम हो रहा है सड़क के क्षेत्र में, तो उनके इलाके में भी अच्छी सड़कें बन जाए। इस बात के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय गडकरी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। महोदय, हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने आंकड़ों के साथ बड़े विस्तार में चीज़ों को लोकसभा के अंदर रखा है। न तो मैं उन आंकड़ों को दोहराना चाहता हूं और ना मैं बड़े विस्तार में जाना चाहता हूं, इसलिए कि हर तरफ जब प्रशंसा ही प्रशंसा है तो फिर उसमें लोकसभा के समय के महत्व को समझते हुए जी उस प्रशंसा सुनने के मंत्री इधर नहीं है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। उन तक बात पहुंच जाएगी सर, उन तक बात पहुंच जाएगी। और हमारे जनरल वीके सिंह साहब तो हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं 2-3 बातें कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। नंबर 1, एक नेशनल हाईवे है हमारे बिहार के अंदर जिसका नंबर है 139-139, जो बिहार की राजधानी पटने से शुरू होती है और बिहार के कई जिलों पटना, अरवल, औरंगाबाद होते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश करती है और उसके बाद झारखंड के पलामू जिले में जाकर वो समाप्त होती है। ये जो सड़क है महोदय, वो सीधे सीधे तौर पर 3 राज्यों को जोड़ती है। बिहार को सीधे सीधे झारखंड और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव मैंने काफी पहले मंत्रालय को भी दिया और बिहार सरकार से भी आग्रह किया, लिखित रूप में भी। मेरे ही आग्रह पर बिहार सरकार ने इस सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा है, भारत सरकार को भेजा है। जहां तक इस सड़क पर पीसीयू का सवाल है, पैसेंजर कार यूनिट का सवाल है, जो क्राइटेरिया है भारत सरकार के सड़कों के 4 लेनिंग करने का, वो 10,000 है, लेकिन इस सड़क पर पीसीयू 12,000 है। और यदि अभी अभी सर्वे किया जाए तो ये पीसीयू इसका 1.5 यानी 18,000 के आसपास हो जाएगा। महोदय, इस सड़क पर 2 चक्के की सवारी, साइकिल से लेकर बाइक और फिर अनेक चक्कों वाली सवारियां, पैसेंजर गाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां और साथ साथ 4 व्हीलर, इतना दबाव है इस सड़क पर कि हम लोग जब अपने जिला मुख्यालय औरंगाबाद से पटने जाते हैं, जो मात्र 140 किलोमीटर है, 4 घंटे लगते हैं महोदय। हम लोग जब अपने शहर से झारखंड या कलकत्ता या दिल्ली के आते हैं तो 4 लेन है, एवरेज स्पीड होता है 100 किलोमीटर 1 घंटे में, लेकिन जब पटना जाते हैं तो यही एवरेज 35 किलोमीटर हो जाता है। एक्सीडेंट भी बहुत बड़ी संख्या में हो रही है, चूंकि इतनी भीड़ है इस सड़क पर, इतना रश है कि दुर्घटना होना स्वाभाविक है। तो मेरा निवेदन यह होगा और मैं आशा करूंगा कि जब जवाब आए माननीय मंत्री जी का, तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि उस जवाब में ये घोषणा हो कि इस सड़क को 4 लेन किया जाएगा।
चूंकि सारा क्राइटेरिया यह सड़क फुलफिल करता है, कोई इफ बट नहीं है, कोई कारण नहीं है कि यह सड़क 4 लेन ना हो। महोदय, इसके साथ साथ 2 और सुझाव हैं, कोई नई मांग नहीं है। दिल्ली से कोलकाता जो सड़क जाती है, नेशनल हाईवे 19, वाराणसी से धनबाद तक अभी 6 लेनिंग का काम तेज गति से शुरू हुआ है, माननीय मंत्री जी की देखरेख में, उनकी समीक्षा के बाद। वरना कई वर्षों से ये काम बहुत विलंबित था, लटका हुआ था। अभी मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इसमें तेज गति से काम शुरू हुआ है। लेकिन वर्तमान में सड़क थोड़ी खराब है। सासाराम टोल से लेकर डोभी एक जगह है जो दिल्ली से करीब करीब 1020वें किलोमीटर पर होगा। इस बीच में सड़क थोड़ी अच्छी नहीं है। ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगा कि इसकी स्थिति को बहाल किया जाए और इस मंत्रालय की माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की जो छवि है और इस मंत्रालय की जो छवि है उसके अनुरूप ये सड़क हो। क्योंकि गया से वाराणसी जाने में एक व्यक्ति को 4 जगह टोल देना पड़ता है। 4 जगह टोल देकर अगर उसको उसके मुताबिक उसके लायक सड़क ना मिले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में। इसलिए मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इसकी स्थिति को अच्छी की जाए। साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले से ही इस मंत्रालय में बहुत बड़ी संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण हो रहा था। लेकिन इस बार की बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश के तहत जिस प्रकार ज्यादा बजट इस मंत्रालय को दिया गया है तो लोगों की उम्मीद भी जग गई है। और हमारे क्षेत्र से नई गुजरने वाली एक नई सड़क का ऐलान हुआ है, उसकी घोषणा हुई है। वाराणसी से कोलकाता एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के साथ इस सड़क का निर्माण करने की घोषणा मंत्रालय ने किया है, जिसपे 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इसका भी निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। बड़ी खुशी की लहर है हमारे इलाके में, साथ साथ झारखंड के इलाके में भी, बंगाल के लोगों में भी। और अंतिम बात कहते हुए पुनः एक बार ये निवेदन कि NH 139 पटना, अरवल, औरंगाबाद, हरिहरगंज से लेकर पड़वा मोड़ पलामू जिले में एक जगह है झारखंड में, इस सड़क को निश्चित रूप से 4 लेन करने की घोषणा सुनने के लिए मैं आशान्वित हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री पी वेलुस्वामी। Thank you, Chairperson sir. In India, majority road infrastructure is being used for transporting 60% of goods, 85% for passenger traffic, but in reality, 2% of the road network carry around 40% of total road traffic. As on March 2019, our country is having 1.3 lakhs kilometer of national highways and 1.8 lakhs kilometer of state highways. Sir, a portion of cess collected on petrol and diesel has been earmarked for the development of national highways and state highways, and the amount pending in the fund is non-lapsable. The funds are being transferred to NHAI and the state UT governments for the development of road, infrastructure and other projects like ports, railway track and airports. For 2022-23, the transfer from CRIF towards the ministry is estimated at rupees 1,59,616 crores. This is 61% more than revised transfer in 2021-22, rupees 99,239 crores. Sir, the Kodaikanal-Munnar Road, old SH-18, was located in my Tindukal Parliament constituency at spread over the district of Tamil Nadu and Idukki district in Kerala. The road is situated on an elevation of 2,480 meters, 8,140 feet.
It was one of the highest roads in India. South of Himalayas prior to its close in 1990. The old road is disparate condition, not usable for any kind of transport due to damages and overgrown vegetation in most of the areas. The project to be taken on CRF scheme. Sir, while the NHAI is developing 3,500 kilometers of national highways in Tamil Nadu, it has completed only 125 kilometers of project length. The ministry should take steps to speed up the work of remaining 2,214 kilometers of ongoing project on our footing. To speed up the 4-lane project under Pardhamala includes 7.3 kilometer elevated 4-lane bridge connecting the Pandian Hotel junction with Setikulam and widening the existing 30.4 kilometer 2 lanes into 4 lanes from Setikulam to Nattam on the NS 785. Sir, last point. There is a major junction in Trichy-Tindikal highway at Silapadi, kilometer 417.2, which was built by NHAI to provide an underpass for the benefit the local people at Silapadi crossing at Silapadi. Thank you, sir. Next, Shri Devji Patel ji. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं भारत सरकार द्वारा बजट में पेश की गई सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी और विराजमान श्री वीके सिंह साहब को। इन्होंने विगत 7 साल में सड़कों को परिवहन के लिए जिस विशेष रूप से जोर दिया और एक जाल पूरे भारत के अंदर बिछाया। सभापति जी, मैं याद करता हूं सम्मानीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की और हमारे गांवों को जोड़ा। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। अध्यक्ष जी, उस टाइम पे काली सड़क हम देखते थे और मैं वैसे मेरा निवास अहमदाबाद है। अहमदाबाद से मैं सांचौर जब आता था तो एक बार हम ये सोचते थे बीच में होल्ड करें और उसके बाद में हम आगे प्रवास करें, लेकिन अटल जी ने उस समय भी जो गुजरात का नेशनल हाईवे बनाया और बाद में अभी गडकरी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने जो पूरे देश में हाईवे के निर्माण का कार्य किया, वो एक भारत की जो परिकल्पना थी वो हमारे सामने पेश की। मेरे क्षेत्र के कई लोग प्रवासी है। अध्यक्ष जी, हमने जब यहां पे सामने में विपक्ष में बैठा था और कई बार मैं मांग करता था, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हम लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन वापस आने के लिए हमारे पास में रेलगाड़ी नहीं थी। मैं धन्यवाद देता हूं, मोदी जी की सरकार आई 2014 में और 2014 में सरकार आने के बाद में नेशनल हाईवे जो बनना शुरू हुआ, अब रेलगाड़ी की हमारे वहां पे कम चर्चा करते हैं। बाई रोड वहां से निकलते हैं और सीधे हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। यहां पे अपना काम निपटा के वो वहां पे वापस अपने कर्म भूमि में पहुंच के वहां पे व्यापार और व्यवसाय करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद दूंगा। आंकड़ों में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर धन्यवाद दूंगा कि पिछले साल के मुकाबले 68,000 करोड़ जो ज्यादा दिए उस पर थोड़ी सी नजर मेरे क्षेत्र की भी है। वो वीके सिंह साहब को जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कुछ हिस्सा हमारा रख लें तो शायद हमारा और उद्धार हो जाएगा। उसमें चूरू को भी ले लीजिएगा। इसके साथ साथ में जो जीरो फ्यूल पॉलिसी, सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी होती है आज जो गाड़ियां आनी शुरू हुई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो इलेक्ट्रिक से चलती है, और अगर सड़क अच्छी होगी तो उसके अंदर आने जाने में भी जो फ्यूल की बर्बादी हो रही थी उससे भी हमें बहुत फायदा होगा। जैसे गडकरी जी खड़े होते थे और उन्होंने जो आंकड़े दिए कि भाई 50 पैसे में ये चलेगा, 1 रुपए में चलेगा, और आज सही मायने में भारत के अंदर वो सारे फ्यूल को नीचे लाने का कार्य भी इस मंत्रालय ने किया है। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक जो नया विषय आया है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 60 किलोमीटर की 8 परियोजनाओं के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं 22-23 में,
और आगे और इस पे कार्य कर रहे हैं। मैं उसके लिए भी गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो नेशनल रोपवे है इसके माध्यम से पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखने जाएं तो उसमें भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और मेरे राजस्थान में जैसे आज दिन में भी एक विषय चला था कि पर्यटन की दृष्टि से जो भी बाहर से आता है वो राजस्थान के अंदर पर्यटन के मार्ग से होते हुए गुजरना पसंद करता है। और मेरे वहां पे तो एक माउंट आबू है जो राजस्थान का कश्मीर कहलाया जाता है। अध्यक्ष जी, वो जो माउंट आबू है वैसा ही एक मिनी माउंट आबू मेरे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जसवंतपुरा का फोर्ट है, और पास में ही जालोर का एक फोर्ट है जहां पे केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे, लेकिन शायद कोई पैसे टेंडर आमंत्रित करते हैं उसमें नहीं आ रहे, शायद कहीं कुछ धन की कमी है। तो मैं वीके सिंह साहब से जरूर निवेदन करूंगा कि उसको भी लिया जाए, ताकि पर्यटन की दृष्टि से मेरे वहां के जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिले। क्योंकि जालोर के अंदर इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, हम लोग प्रवास के तौर पे ज्यादातर डिपेंडेंट है। तो इस पे जरूर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। साथ ही मैं मेरे क्षेत्र की कुछ विषय जो है मैं मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, उदयपुर के अंदर जब हमारे वहां पे एक नेशनल हाईवे का उद्घाटन हुआ था, तब सम्मानीय गडकरी जी और उद्घाटन करने आए थे। तब एक सैद्धांतिक रूप से उन्होंने एक घोषणा भी की थी कि मेरे वहां पे रोहिट से लेकर सांचौर, जालोर, करड़ा होते हुए उसको नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। क्योंकि एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ सांचौर विधानसभा क्षेत्र है, एक साइड में गुजरात पूरा बॉर्डर लगता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी लिखेंगे तो थोड़ा मैं निवेदन कर लूं सर, क्योंकि ये मंत्री जी 68,000 में कुछ हिस्सा बन जाए तो काम हो जाएगा मेरा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणा उस समय पे थोड़ी हुई थी उसके अंदर रोहिट से करड़ा होते हुए सांचौर जो नेशनल मार्ग है उसको गति शक्ति में आप समावेश करें, तो ये जो मेरा क्षेत्र है इसकी पांचों विधानसभा से होते हुए ये क्षेत्र से ये राज्य मार्ग, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बहुत काम आएगा। और जिससे मेरा संभाग जुड़ता है, जिससे मेरी राजस्थान की राजधानी जुड़ती है, और जिससे दिल्ली जो राजधानी है वो भी जुड़ती है। और मैं आपको इतना 100% गारंटी देता हूं कि उस मार्ग पे आप फिर बाद में उसको और बढ़ा के 6 लाइन करने का प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि इतना ट्रैफिक वहां से गुजरता है। ये जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसके साथ ही सांचौर के अंदर एक ब्लैक स्पॉट है, जैसे गडकरी जी ने कहा था कि सांसदों को सुझाव से ब्लैक स्पॉट चयनित किए जाए, और जो ब्लैक स्पॉट है जहां पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट को वहां से खत्म किया जाए। आपने पहले एक ब्लैक स्पॉट मैंने जरूर आपको बताया था, उस पर आपने ब्रिज दे दिया। अभी एक रानीवाड़ा सांचौर 4 रास्ता है। मंत्री महोदय, ज्यादा तो नहीं लेकिन 15 दिन में एक एक्सीडेंट जरूर वहां होता है और एक जान वहां चली जाती है। मैंने कई बार अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको ब्लैक स्पॉट घोषित करके वहां पे एक ब्रिज बनाया जाए। आप एलिवेटेड बनाएंगे तो आपको धन्यवाद है, क्योंकि वहां पे बाजार भी मुख्य बाजार है। अगर ये ब्लैक स्पॉट की जगह पे ब्रिज बन जाएगा तो शायद वहां के जो हमारे निवासी हैं उनकी जान नहीं जाएगी, उससे उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। एक और मेरा रोड है अध्यक्ष जी, NH 168 जो गुजरात के अंदर है, वहां से झेलडा एक गांव आता है। गुजरात के अंदर डीसा धानेरा के आगे झेलडा से लेके सिरोही जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, उसके अगर वहां पे NH मिलाया जाए और उसमें भी रेवदर और मंडार 2 बड़े कस्बे आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, उन बड़े कस्बों के बीच में से ये हाईवे निकलता है और उसके माध्यम से कई बार कई लोगों की जान गई है। कई छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उन बच्चे वो बड़ी जो ट्रक्स और बड़े जो ट्रैफिक के जो व्हीकल्स है उनकी चपेट में आके बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर इसको बाईपास करेंगे तो ये भी एक बड़ा, क्योंकि कांडला जाने के लिए वो एक राजमार्ग है, और कांडला जब वहां से निकलते हैं तो बड़े बड़े जो पोर्ट के लिए जो भी कंसाइनमेंट है वो वहीं से निकलते हैं। तो इसको एक बनाना बहुत जरूरी है। झेलडा से लेके सिरोही मार्ग तक वाया रेवदर और मंडार बाईपास। एक विषय जरूर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी मंत्री जी मैंने यहाँ बहुत प्रस्ताव भेजे हैं। भीनमाल, पुनासा, मीठीबेरी, सिरोही कालंदी, रामसिंह रोड, ये सारे प्रस्ताव मेरे यहाँ पे पड़े हैं और मुझे पूर्ण आशा है, आशा ही नहीं आपसे तो
विश्वास, और जैसा भी सुशील सिंह जी ने कहा, ऐसा पूर्ण विश्वास है साहब। ज्यादा लंबा भाषण हम नहीं, उसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। हमें तो ये छोटी छोटी सड़कें अगर मिल जाएगी तो इसमें हमारा उद्धार हो जाएगा और हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सही मायने में एक विकास के पथ पे चलने लगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, रेगिस्तानी क्षेत्र है, किसान से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र है, लेकिन किसानों को ये छोटी सड़कें अगर मिल जाती है तो उससे किसानों को बहुत लाभ मिलता है। और किसान के बच्चे जो व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार करने के लिए कहीं भी छोटे कस्बे में जाना चाहते हैं, वो वहां पे जाके काम कर सकते हैं। एक मंत्री जी से मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा और मैं उसके लिए सरकार को और सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र से एक बहुत बड़ी भारतमाला परियोजना निकाली है। भारतमाला परियोजना निकाली तब तो अध्यक्ष महोदय वो विकास के काम आएगी, लेकिन उसमें सभापति जी एक समस्या। सभापति जी, भारतमाला की बात करते घंटी मत मारो आप। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारतमाला जो है वो भारतमाला हमारे लिए एक आफत ये हो गई सभापति जी, किसान को बहला के जो भूमाफिया थे उन्होंने डीएलसी का रेट बढ़ने दे दिया। डीएलसी मींस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, और विधानसभा के अंदर 1 मिनट लगेगा सर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा इसमें। डीएलसी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, और विधानसभा के अंदर गहलोत सरकार ने उसकी डीएलसी घटा दी। यहां से नितिन गडकरी जी ने भी गहलोत सरकार से कहा था कि आप जो पैसा किसान को भारतमाला परियोजना के तहत देना है वो आप लिख के भिजवाइए, हम पैसा देने को तैयार है। लेकिन वहां की सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस डीएलसी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि किसान बर्बाद हो रहा है। 8 लाख की जमीन मंत्री महोदय 25,000 रुपए उसको डीएलसी मिल रही है। ये किसान के लिए सरासर अन्याय। अगर आप चाहें तो उसको निकाल के देख सकते हैं। किसान एकदम बर्बादी की ओर जा रहा है। और उसके साथ में मंत्री जी, पास में 10-10 मीटर की जमीन आपने ले रखी है। मैं उसमें आपसे सिर्फ एक सर्विस रोड मांग रहा हूं जिससे ट्रैक्टर चल सके। क्योंकि हाँ, कंक्लूड ही कर रहा हूं सर, इससे आगे कोई पन्ना नहीं है। समाप्त, हिंदी में समाप्त वही कर रहा हूं सर। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा मंत्री जी कि पास में 10 मीटर की जो आपकी लैंड पड़ी हुई है वो किसी काम की नहीं है। अगर उस लैंड में किसान का ट्रैक्टर लेके वो अपने खेत में जाएगा तो दूसरे किसान से झगड़ा नहीं होगा और वो किसान अपने जमीन की बुआई कर सकेगा। और अन्नदाता जो हमें अन्न देता है वो अन्नदाता भी सुखी हो जाएगा। ये जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसी के साथ में आपने सभापति महोदय बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री रविंद्र। Sir, thank you for the opportunity, sir. Sir, let me first of all acknowledge the fact that we have an immensely future-savvy Minister of Road Transport who embraces innovative, at the same time, sustainable mode of infrastructure development aligned with the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We must appreciate our Minister Sri Gadkari ji's innovative conception or fast transforming the Ministry of Road Transport and Highways as the leading engine of growth. Sir, having recognized the significance of this sector in nation building, our Honorable Prime Minister Sri Modi ji envisioned that PM Gati Shakti Master Plan to bring about synergy between infrastructure and logistics across the length and breadth of India. Sir, through the PM Gati Shakti Master Plan, our national highways network will be an expansion of by 25,000 kilometers in 2022-23 with an outlay of 20,000 crores. Similarly, the Bharatmala project with a project outlay of 5.35 lakh crore was launched by our government, aimed at bringing smoother connectivity across the nation with improved roads and infrastructure. It is quite encouraging to see 1,34,015 crore allocation towards Nahai, which also includes the Bharatmala Pariyojana and is the highest ever allocation, standing at 67% among the major heads. I am hopeful that states like Tamil Nadu, with a strong industrial and agricultural base, will receive its due share in the allocation. Sir, I wish to request the southern districts of Tamil Nadu may be paid more attention while sanctioning projects, as it will help in the economic advancement of this region. Sir, in my Theni parliamentary constituency,
the pre-construction work of the 4-lane section of NH 85 between Uslambati to Bodinayagnur is pending approval of the Land Acquisition Committee. I wish to request Honourable Minister to kindly intervene to ensure the speedy sanction on and clearance for this project. As an extension of the above NH 85 project, I request the government to sanction a fresh DPR for the 25-kilometer greenfield project connecting this NH 85 from Uslambati to NH 7 in Madurai, which passes through the new AIMS sanction in Madurai, so that the entire project get upgraded as a utility corridor. Similarly, sir, there is a NH 183 from Dindigul to Kumali passing through my Theni constituency, which is operating a 2-lane highways. However, over the years, the traffic along with NH has increased manifold with over 20,000 PCU, passenger car unit per day, sir. With increased traffic, major accidents along this line has become routine. 10 black spots have been reported along this road. Sir, it is my humble request that Honourable Minister may kindly sanction a new greenfield 4-lane project connecting Dindigul to Kumali through Theni district. Sir, with this region being located along active tourist circuit and with the famous pilgrim sites of Palani and Sabarimala critically dependent on this inadequate roadway for 2 minutes, and connectivity between Kerala and Tamil Nadu. A new 4-lane will significantly help in providing the much needed logistic connectivity alongside economic development of the region. And I also wish to mention here that several projects have been stalled or delayed indefinitely. In my Theni parliamentary constituency itself, Sakulathmettu road project remains a dream for more than 4 decades, pending approval of Forest Department. Sir, I am of the opinion that development should be sustainable and should not be at the cost of destroying our environment. However, our Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi's envisaged more innovative techniques should be smartly integrated to balance infrastructural landscape with environmental protection. I wish to congratulate our Honourable Minister of Road Transport and Highways, Sri Gadkariji, 1 minute, that are the innovative novel elevated National Highway 44 passing through the Pench Tiger Reserve in Madhya Pradesh. Sir, important, sir, if needed. Please conclude. Benefiting not only humans in the region, but also helping to protect animals thriving through the NH 44. On the similar lines, I wish to request sanctioning DPR for the National Highway Connectivity NH 183 in Tamil Nadu and NH 185 in Kerala, benefiting both people as well as the wild animals in this region. Sir, I wish to suggest that much higher share may be allocated to heads like maintenance and road safety that would increase the lifespan of roads as well as the motorists. Similarly, contemporary technologies, including artificial intelligence, may be incorporated to improve the efficiency of the existing transportation infrastructure through real-time traffic flow management. With this, I wish to conclude by extending my support for the demand for grants for the Minister of Road Transport and National Highways for the period 22-23. Thank you very much. Honourable Member Srimati Pratibha Singh ji. Thank you, sir, for giving me the opportunity to talk on National Highway. I represent the state of Himachal Pradesh and come from a constituency where this work is going on. But I would like to highlight certain points which I feel during my tour the people told me their grievances, and whatever has to be done, it has to be brought to the notice of Government of India. And the state of Himachal Pradesh is renowned for its natural beauty, and roads are very vital infrastructure for rapid economic growth of the state. The development of important sectors of economy such as agriculture, horticulture, industry and forestry depends on efficient road network. In the absence of any other suitable viable economic modes of transportation like railways, airways, waterways, roads,
play a vital role in boosting the economy of the hill states like Himachal Pradesh. Thus, it is vital for economic development of the state. Easily availability, adaptability to individual needs and the cost saving are some of the factors which go in favor of road transport. Road transport also acts as a feeder service to railways, shipping and air traffic. The NHAI has embarked on developing the following roads under 4-lane projects in Himachal Pradesh, in which the work is in progress. Parwanu, Solan, Shimla, Dhali, National Highway 22, National Highway 05, and Swarghat, Mandi, Manali, National Highway 21. The major benefits for 4-laning, broadening the national ways are: it reduces the length of the road, it reduces constant traveling time, and it will create access to better healthcare facilities for the people. It will reduce the number of road accidents and ensure free flow of traffic. It shall economize the fuel consumption and wear and tear by 50%, thus increasing efficiency. It will substantially use environmental pollution. Speaker, sir, through you, I would like to bring to notice of the government that I would like to raise some of the very important issues pertaining to the outgoing 4-laning work on national highways in Himachal Pradesh in this August House. The pace of the ongoing 4-laning work is much slow, and with much pace it will be extremely difficult to complete such economically and strategically important projects on time. During recent visit of my parliamentary constituency, local people have raised many grievances and demands with respect on the ongoing 4-lane work, which I would like to present through you in this August House. The major grievances and demands raised by them are hereby summarized as: the ongoing 4-lane work has led to change in the orientation of national highway in many parts of the stretch. Therefore, the local roads have been completely delineated from the national highways, due to which the general public are suffering a lot as the work is being delayed, and I suggest that it should be timely done. Their old age accessibility has been hampered. Besides massive soil erosion, in view of the vertical cutting of the hillsides, dumping of debris down the hill and felling of thousands of trees has caused irreparable damage. It has created unnecessary problem of water logging, blockades and traffic jams to general public. Therefore, it is requested through you, sir, that some concrete way out should be formulated by developing road services to connect the village local roads to newly 4-laned national highway to provide hassle-free accessibility to local population and villages in public interest. Sir, about the compensation also, I would like to state in the House that the other major issues in the compensation provided in lieu of land acquisition to the affected parties. Road undoubtedly are the lifeline of the hills, but the 4-laning projects across the state has brought misery to thousands of people who were uprooted and lost their livelihood. Only the circle rate has been taken into consideration and not only the market rate. Other factors like market value, commercial viability, productivity have not been taken into account while working out the compensation. Another important factor, sir, is tourism. I would like to state that the tourism industry is the backbone of Himachal Pradesh. The tourism sector of Himachal Pradesh contributes 7% of the state GDP. Domestic tourist inflow in the state reached 16.83 million in 2019, when foreign tourist arrival reached to 3,83,000. As of December 2019, there were
3,679 registered hotels in the state, a significant rise was noticed in the domestic as well as foreign tourist inflow during last few years, but there is a sharp decrease of 81% in the tourist arrival up to December 2020. Roads remain the main mode of transport in Himachal Pradesh. As you know, there is no air connectivity or rail line as such, so our people depend on the roads, so this should be given priority. The geography of Himachal Pradesh presents considerable challenge to the development of transport infrastructure. Nevertheless, the state has made significant progress in road connectivity in the last few decades, thanks to our Congress governments. But the frequent log jams, blockades due to cutting off extravagant excavation works due to four-laning work on national highways has impacted badly in the tourism industry. Reckless cutting of hills for four-lane project has become a bane of the tourism industry in Himachal Pradesh. Frequent landslides on national highways resulting in traffic blockage and even accidents were making tourists wary of visiting the state. Roads are full of potholes. There has been reports of the key Parwanu, Shimla, Kiritpur, Manali highways being hit by landslides, spelling doom to the tourism industry. Reports of landslides and disruption of traffic on key highways are logging the headlines in newspaper and electronic media. As a result, the tourists have been forced to cancel their bookings. The occupancy in hotels, which was about 60 to 70% before the four-lane work started, has come down to 10 to 20%. Stakeholders are not taken into confidence before planning and execution of the four-lane projects. Alternative routes are not carved out while existing routes are not maintained properly, discouraging the tourists from visiting the state. Hotel occupancy as a result went down badly, and the bad road condition and landslides had the worst impact on the adventure tourism in tribal areas and higher hills, as travelling were turned as a nightmare. Further demolition of illegal constructions by administration also earned a bad name for the tourist industry. Fearing inconvenience, tourists were apprehensive of visiting Simla, Manali, Dharamshala and other parts of Himachal Pradesh. Economy and loss of livelihood. There has been substantial loss of livelihood considering the immense tourism potential in the state, especially Mandi, Kullu, Manali and Simla areas. The land along the roadside has highly commercial values for hotels, restaurants and eco-resorts, many of which has been wiped off to make the way for the project. Tenants between Sundarnagar and Manali, which falls in my constituency, who fall in the category of livelihood losers, have not been taken into account and identified. Such people have not just been uprooted or displaced, but even have lost their livelihood. The muck and debris management and the environment hazards is also a very important issue, sir. I should bring it to the notice of this August House. There has been intense environmental violations in the outgoing four-laning project of national highways. The dumping of debris is being done in an unscientific manner, with the results that loose debris has made its way into water bodies. While constructing the roads, it is necessary that it cannot be at the cost of environment. The principle of substantial development cannot be avoided. At the end, I would like to draw your attention to some important issues in my parliamentary constituency, in specific pertaining to the national highways of Himachal Pradesh for consideration and urgent action by the Ministry of Road Transport and Highways.
One point is, sir, that Bhuntar Bridge at Kullu is required to be constructed urgently to ensure all-weather connectivity to the international tourist destination Manali. The state government has already sent an estimate to the ministry for obtaining necessary sanction, which may please be expedited. Another bridge over Tirthan River at Daman at Sanj, Luri, Ani, Jalori, Banjar Out Road is required to be constructed urgently to ensure all-weather connectivity and smooth flow of traffic. Because this area comes and there is heavy snowfall in this area, so by making this tunnel, it will be a good connectivity to those areas. In the end, sir, I would like to say that traffic on Sanj, Luri, Ani, Jalori, Banjar Out Road remains suspended for months during the winter season due to heavy snowfall on Jalori Pass, situated at an altitude of around 2,500 meters. The proposal of providing year-round connectivity by constructing a tunnel under the Jalori Pass has been moving at a snail's pace. Matters needed to be prioritized by the ministry for early construction of the tunnel. Chandigarh-Manali Mandi Road has strategic economic, but I'm just ending it, sir, economic for the state as it connects the world-famous tourist destination of Kullu and Manali with the national capital. Fall laning of this road is underway, but the existing road is badly damaged, causing lot of inconvenience and discomfort to the road users. The National Highway needs to prioritize its maintenance or war footing for the benefit of public at large. Adequate measures to be taken to grant compensation for land acquisition as per prevailing market rates. 2 times is equal to circle rate into 2, 4 times circle rate into 4. This is factor 1 and factor 2. Just I'm ending it, sir. The government may be directed to increase the pace of work so that the project is completed well in time, within the time limit, and the directions may be given to for the proper maintenance and regular repairing of the roads to facilitate commuters. There could be proper debris muck management so that to preserve the environment and ecology. Way-wide amenities should be developed along the roads to facilitate commuters and tourists and to provide livelihood to generate employment to the local people. Thank you. Provision of service road to connect the old road, village road in the national highway may be done. This should be intense monitoring on ongoing 4-line lane. Adequate measures and relief should be provided to these households who have been affected during land acquisition and 4-laning, but their land did not come in the right way. So these are some of the major issues, sir. I would like that the government takes notice and it should be done at a faster pace so that the work is completed. I think Honourable Minister is noted everything. Thank you, sir. Thank you. Honourable Member Shri A. Marif. Thank you, Speaker, sir. I stand here on behalf of CPIM on demands of grants of the Ministry of Road Transport and National Highways. Sir, I take this opportunity to acknowledge the interest shown by the Honourable Minister Nitin Gadkari ji for the development of national highways in state of Kerala in a time-bound manner. Unfortunately, he is not present here. Sir, road transport is vital for the development of the country and has an important role in our economic growth and the employment generation. However, unfortunately, this government is adopting a policy of reducing its share drastically and excessively, relying on the private sector for the development of roads. In all projects are implemented in built on operate and transfer BOOT mode. Sir, by doing this, the entire burden is passed on to the travellers in the form of tolls to be paid for using these roads. And what is the end result of this, sir? Result is that the private companies are looting the people for years and years.
and there is no transparency in the amount collected as tolls. Sir, as per agreement made by the NHI with the private players after the construction cost is recovered, the toll rates are to be reduced to 40%. But what is happening in the reality, sir? Every now and then the rates are hiked, and the whims and fancies of the companies and NHI and central government remaining mute spectators. Sir, I challenge the government to come up with a white paper on the toll collected so far as part of various projects in the country and bring the facts before the people. Once the toll booth is constructed, and it will never shut, the collection of toll will continue to the end of the world. For example, sir, the toll booths constructed in Marid near Ernakulam is established three or four decades before, but the toll collection is continuing till this date. The amount collected more than the 10,000 times multiple than the amount for bid construction. I request to check it. Due to the time constraints, I am not going to the quality of the roads, which has already mentioned by the Dr. Vishnuji and others. I would like to know what is the mechanism prevailing in the checking the quality of roads and constructed by the NHIs. Sir, I would like to request some changes about the PMJ's road stipulations. PMJ's road to be modified as the basis of density of population and the land availability of the states. I request you to relax the strict stipulation of PMJ's roads in Kerala concerned. I request you to relax the width of the roads to 4-meter width and the length of 1 kilometer Kerala is concerned due to the density of populations. And the allotted amount for the road safety is very low and it should be increased, enhanced. Sir, I'm proud to say, government in Kerala has taken a bold decision not to collect tolls for bridges built using state government fund way back in 2019, and toll collection for about 29 bridges were stopped. Sir, so I urge the union government to stop collecting the tolls for at least small projects so that people are not overburdened. So domestic uses, definitely domestic uses. Sir, coming to the road development in Kerala, the ruling LDF government is making all efforts to develop both coastal highway and hill highway by its own using the funds available through Kerala Infrastructure Investment Fund Board. But not only that, the central government is ready to financially assist the Kerala government for these highways, but it is finding fault with the funds raised under the KIFBI. With the support of central government, the state government would be able to bring the more development, and hence I urge the government, the Honourable Minister, to devote more funds for the state government's projects. Sir, regarding the widening of National Highway 66 passing through Kerala, a number of problems with the currently approved designs have been already brought to the notice of the Honourable Minister. Sir, one of the major demands is related to the construction of grade separator in Karunagapalli town in Kollam district in my parliament constituency. Sir, Karunagapalli is a major trade center in southern Kerala, with shops and trade centers spread in both sides of the national highway for more than a kilometer. And it is near to the very famous Amardanandamai Mutt. Sir, hospitals, schools, government offices also were spread in both sides of the roads. Sir, the proposed construction of a grade separator will literally divide the town, making it difficult to the travelling of people from one side to another, badly affecting the prospects of the future development of the town. With the construction of the first bowstring arch type bridge in Valiyazhikal is near the Karunagapalli. So, hence, I demand for the Honourable Minister urgently intervene for changing the approved design for grade separator and instead consider the construction of an elevated highway in the form of open